आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकती है। योर वोकेबुलरी कैन बी गुड। आपको पता भी हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली बोलना क्या है। बट यू कैन स्टिल साउंड लेस कॉन्फिडेंट देन यू एक्चुअली आर। व्हाई? मे बी द प्रॉब्लम इजंट योर ग्रामर, मे बी इट्स नॉट योर वोकेबुलरी, एंड इट्स मे बी नॉट योर एसेंट। Sometimes it's the way you speak. For example, imagine your manager says, Ramesh, what do you think about the idea? And you say, actually, maybe we could possibly try it. Now listen to this. I think we should try this approach. Same person, same idea, completely different approach. You may be doing these things every day without even noticing them. So today, I am going to show you 7 speaking habits that can make you sound less confident and less professional. Let's start with a very small word, sorry. Imagine you are in a meeting and you want to ask something and you say, sorry, I have a question, or sorry, can I say something? अब एक सेकंड के लिए सोचो कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? कि आपने कुछ गलत किया पूछ के? नो, asking a question isn't a mistake. So instead of sorry, I have a question, you can say I have a question. Or if you want to be more polite, and you can also say, could I ask a quick question? Instead of saying sorry, can I share an idea? You can say I would like to share an idea. And instead of saying sorry, but I disagree, you can say I see it differently. Notice the difference? आपको सॉरी नहीं बोलना है एंड आप स्टिल पोलाइट हो। नाउ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सॉरी बोलना ही नहीं है। इफ यू एक्चुअली मेक ए मिस्टेक, आई एम सॉरी अबाउट द मिस्टेक, लेकिन बिना किसी गलती के सॉरी क्यों बोलना? एंड इफ यू इंटरप्ट समवन, देन यू कैन से सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। दैट्स परफेक्टली अप्रोप्रिएट। सो हियर इज योर फर्स्ट चैलेंज। नेक्स्ट टाइम यू से सॉरी, आस्क योरसेल्फ, डिड आई एक्चुअली डू समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कुछ गलत किया है? इफ द आंसर इज नो, then remove it. Now let's talk about something which has nothing to do with vocabulary. It's your voice. Listen carefully. I will send a report today. Now, listen again. I will send a report today. Same words but complete different feeling. सेकंड वन ऐसा साउंड कर रहा है कि आप उससे पूछना चाह रहे हो कि मुझे आज ही भेजना है, लेकिन मैंने पहले कहा उसमें ऐसा लग रहा है कि उससे बता रहा हूं कि मैं आज भेज दूंगा। दिस इज ऑफन कॉल्ड अप स्पीक और अप टॉक। जब स्टेटमेंट की एड में वॉइस अननेसेसरीली ऊपर चली जाती है। मुझे कहना है कि मैं इसे फ्राइडे तक कर दूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ आई कैन कंप्लीट इट बाय फ्राइडे। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है कि मैं इसे फ्राइडे तक कर लूंगा। आई कैन कंप्लीट दिस बाय फ्राइडे साउंड्स अनसर्टेन, कि पता नहीं कि फ्राइडे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट। इमेजिन योर बॉस गिव्स यू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू से आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, और आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, आई एम नॉट गुड एट प्रेजेंटेशंस, और मे बी माय इंग्लिश इजंट वेरी गुड। आप शायद से सिर्फ ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, but you are putting spotlight on your weakness before you have even had a chance to show what you can do. Try this instead. I haven't worked on this before, but I am willing to learn. या फिर आप कह सकते हो I don't have much presentation experience yet, but I am working on improving it. डिफरेंस देखा आपने? You are not lying, और आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, but you are also not disqualifying yourself. This is especially important if you are learning professional English. बहुत लोग सोचते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स मीन्स प्रोफेशनल इंग्लिश, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल देखो, इन द इवेंट दैट यू रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट मी। यू कैन से इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट। रिमेंबर दिस, प्रोफेशनल इंग्लिश doesn't mean complicated words. Actually, one of the strongest communication skills is taking a complicated idea and explaining it simply. And now we come to one of the most common speaking habits, filler words. Things like actually, basically, like, I mean, a few fillers, completely normal. Even native speakers use them. मतलब कि जो इंग्लिश बोलते हैं, जो अंग्रेज होते हैं,
वो भी यूज करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके आंसर साउंड करें लाइक आपने किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, आप उसको आंसर कर रहे हो बेसिकली आई नो, यू नो, I mean, and the listener is still waiting for your actual point. So, what should you do? Here is a simple trick. Replace the filler with silence. Don't immediately say, basically, you know. Instead, pause 1 second. And here is something very interesting. आपको 1 सेकेंड बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन वो इतना लंबा होता नहीं है। Your brain needs a moment to organize a sentence. Give it that moment. So remember this. You don't need fancy English to sound professional. You don't need a huge vocabulary. You don't need a foreign accent. And you don't need perfect grammar. You need to be clear, calm, direct, easy to understand. Because जो आपका गोल है वो ये नहीं है कि अगला बंदा सोचे कि वाओ इस बंदे को कितने सारे वर्ड्स याद हैं जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। हमारा गोल है वो ये होना चाहिए कि अगला बंदा हमारी बात समझ सके। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप स्पीकिंग। जब तक बोलोगे नहीं इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।